हेलो एंड वेलकम बैक टू वी केयर ऑटोमोटिव डिटेलिंग एंड कार केयर सर्विसेज। आज हमारे पास एक बहुत खूबसूरत गाड़ी आई हुई है और उस गाड़ी के साथ हम लोग बहुत खूबसूरत चीज भी करने जा रहे हैं। तो यस, वी हैव गॉट GLA 200 इन आवर हैंड टुडे, व्हाइट कलर। हम लोग उसको रैप करने जा रहे हैं नार्डो ग्रे शेड्स में। तो नार्डो ग्रे में काफी सारे अलग अलग शेड्स आते हैं, लाइट, डार्क, थोड़ा सा और डार्क। तो हम लोग ने जो चूज किया हुआ कलर है वो आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। सो आई विल शो हाउ द कार इज, अभी कैसे दिख रही है, बाद में कैसे दिख रही है। पूरे वीडियो तक बने रहिए तो आपको बिफोर आफ्टर और काफी सारे डिफरेंसेस, क्या क्या करना पड़ता है रैपिंग के टाइम पे, हर एक चीज आपको ठीक से देखने मिलेगी। एकदम सीधा सीधा जाना है, सीधा। This is Mercedes GLA petrol diesel. This is Mercedes GLA petrol and we are going to do a Nardo Grey wrap on this car. जैसे कि मैंने थोड़ी देर भी बोला कि इसमें ग्रे में बहुत सारे शेड्स आते हैं, तो we will probably show you the shade tomorrow. एक वीडियो पूरा कांस्टेंट होने वाला है, आज से लेके 3-4 दिन का काम। Right now we are going to the painter which is just next to our studio. वहाँ चल के बाकी का वीडियो कंटिन्यू करें। तो इस गाड़ी में जाने वाले हैं मर्सिडीज के व्हील्स जो पेंट के लिए जाने वाले हैं। तो हम लोग को ऑलॉयज और व्हील्स दोनों अलग अलग करने हैं ताकि ऑलॉयज अच्छे से कलर हो। वी विल बी डूइंग कैलिपर पेंटिंग एज वेल। तो शायद हम लोग रेड कलर के करने वाले कैलिपर्स बिकॉज रेड विल लुक गुड ओवर नार्डो ग्रे। So this would be our backup vehicle to wrap Mercedes GLA. So here we are. अभी हम लोग थोड़ी देर में इसके ऑलॉयज खोलेंगे, ऑलॉयज और टायर्स को हम लोग सेपरेट करेंगे ताकि उसको ठीक से पेंट कर पाए। हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि इसके जो सिल्वर्स है उसको ब्लैक करना है, पेंट से करना है कि विनाइल से रैप करना है, वो हम लोग थोड़ा सोच के करेंगे। So we'll start removing the wheels now. So for now we have skipped plan of painting this door handles because इसके ऊपर रैप आराम से बैठ जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग अलॉय व्हील्स कलर कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे सिल्वर है उसका डिसीजन अभी भी लेना बाकी। तो बेसिकली जो रूफ का कलर है पियानो ब्लैक, इसके साथ अलॉय व्हील्स इसके मैच होने वाले हैं। एंड फिर जो पूरी गाड़ी जहाँ जहाँ पे पेंट सर्फेस है इंक्लूडिंग मिरर, डोर हैंडल्स एंड एवरीथिंग विल बी रैप्ड इन नार्डो ग्रे शेड। तो अभी हम लोग और एक चैलेंज है, जो सैटिन सिल्वर रूफ रेल्स है, फिर जो विंडो गार्निश लाइंस है। अगेन वी आर थिंकिंग कि इसके ऊपर रैप कौन सा किया जाए, ब्लैक विनाइल अच्छा दिखेगा या नार्डो ग्रे इस पे अच्छा दिखेगा। तो मेरे हिसाब से तो ब्लैक अच्छा दिखेगा, सो विल गो विद द ब्लैक। तो हम लोग ने गाड़ी ड्रॉप कर दी है पेंट के लिए और हम लोग वापस जा रहे हैं हम लोग के स्टूडियो की तरफ। सो बाकी का वीडियो कंटिन्यू होगा। So today is the third day of our project और हम लोग सुबह सुबह अभी गाड़ी पिक करने आए। मर्सिडीज का काम ऑलमोस्ट हो गया है, तो लेट्स हैव अ लुक एट द कार। किस हिसाब से उसका पेंटिंग का काम हुआ है अभी हम लोग को मालूम पड़ेगा। So this is how it is. Bumper is right there inside the car. If you can see this. हम लोग ने इसको अभी इसलिए फिट नहीं किया बिकॉज रैप के टाइम पे दोबारा बम्पर्स निकालने पड़ते हैं। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर स्टूडियो एंड यस, आगे कोई बम्पर्स है नहीं गाड़ी में। तो गाड़ी अभी अपने स्टूडियो में आ चुकी है। हियर इज द कार। अभी कुछ चीज़ें हम लोग ओपन करेंगे, जैसे इसका डोर हैंडल हो गया, डोर हैंडल खुलेगा, मिरर खुलेगा और क्या क्या खुलेगा, गार्निश पट्टी, दिस इज कॉल्ड एज गार्निश पट्टी। पीछे का बम्पर खुलेगा, आगे का बम्पर तो ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा है। टेललाइट्स खुलेंगे, हेडलाइट्स के आसपास के सब जितने भी ओपनेबल पार्ट्स है सब निकल जाएंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड।
वी आर एंजॉइंग नार्डो ग्रे। सामने सामने मस्त लग रहा है, एकदम मस्का। पूरी गाड़ी जब हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। थोड़ा इस तरह, थोड़ा गाड़ी की तरह जाओ, थोड़ा सा बस। कार हैज बीन रैप्ड इन नार्डो ग्रे। आपके सामने रिजल्ट है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम लोग ने इस गाड़ी के साथ क्या क्या किया है। तो वेरेवर यू सी ब्लैक, अभी पहले वापस सिल्वर हुआ करता था। क्रोम इंसर्ट्स आर केप्ट एज इट इज बिकॉज क्रोम और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। द मेजर चेंज ऑन द आउटसाइड व्हाट वी डिड इन टर्म्स ऑफ पेंट इज अलॉय व्हील, जो काफ़ी हद तक खूबसूरत लग रहे हैं। एंड द रेड कैलिपर्स आर जस्ट गोइंग वेरी मच ब्यूटीफुल विद ब्लैक। तो बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी। दिस इज द लेफ्ट साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। The mirror has been wrapped. This is not a paint. Handle is again a wrap. It is not a paint. Roof पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया है except back. यहाँ पे white था, वहाँ पे हम लोगों ने piano black मार दिया. Otherwise, roof was already in a piano black shade. We'll go at the rear side of the car. So wherever there was chrome again here, GLA 200 was in chrome. So the GLA 200 was written in chrome. दिख रहा है क्या? It has been painted black. Mercedes logo. It has been painted black. There was a chrome here, which is wrapped. This is not a paint. Again here was satin finish. This is also wrapped. This is not a paint. तो जहाँ पे हम लोग ने कोशिश की है कि जहाँ पे पेंट था उसको हम लोग रैप करें ताकि ओरिजिनल पेंट डिस्टर्ब ना हो। अगर कभी भी कार को ओरिजिनल शेड में वापस लाना है तो इट इज इजी टू टेक दिस रैप आउट एंड विल गेट द ओरिजिनल पेंट्स ऑफ। तो हैंडल बार्स अगेन हियर आर रैप्ड, दोस आर नॉट पेंट। जहाँ जहाँ पे पेंट की जरूरत थी वहाँ पे पेंट की है। ये जो डोर गार्निश पट्टी है दिस वाज इन सैटिन सिल्वर, दिस इज ऑल्सो रैप्ड इन ब्लैक कलर। सो आफ्टर डूइंग द एंटायर कार रैप वी डिड द इंटीरियर जॉब एज वेल। मतलब इंटीरियर डीप क्लीन किया है ताकि कार एकदम नई लगे, एकदम फ्रेश लगे। सो हैव अ लुक एट द राइट साइड ऑफ द कार। तो अभी इसका डिलीवरी का क्या करना है? जो भी करेंगे स्टाइल से करेंगे। You make. I know that you know that I give up my time to be with you, and I know that this love will fade, 'cause you say you'll do things you never do, and I know that you'll never change. So this is how we have completed our first project of wrapping GLA 200. So I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोस के लिए बने रहिए। ये थोड़ा वीडियो हमने अट्रैक्टिव और थोड़ा सा मस्ती टाइप बनाने की कोशिश की है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वी केयर इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट करो। आओ बिंदास।